हेलो स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लास का हमारा टॉपिक है नेशनल बायोसेफ्टी फ्रेमवर्क। नेशनल बायोसेफ्टी फ्रेमवर्क एम है इसका टू मिनिमाइज द रिस्क फ्रॉम बोथ द इंटेंशनल एंड एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म with potential to have adverse economic, environmental and socio-economic impact including genetically modified organisms and their derivatives and processed products। ठीक है, तो बायोसेफ्टी फ्रेमवर्क्स क्यों तैयार किए गए थे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम काम में ले रहे हैं या वो इंटेंशनली या एक्सीडेंटली वो इंट्रोड्यूस हो गए हैं और जिनके रिस्क को कम करने के लिए इनको बनाया गया है। Now scope. Biosafety management applies to the introduction and spread of all biological organisms with the exception of human beings. This includes new variant and strain of organisms that result from traditional and modern biotechnology. ठीक है, तो मैनेजमेंट की बात करते हैं हम। बायोसेफ्टी मैनेजमेंट बायोसेफ्टी मैनेजमेंट में आते हैं हमारे रिस्क एनालिसिस एंड द डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, कंट्रोल ओवर द इंट्रोडक्शन, रिलीज एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज और वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड कंटेनमेंट, border control, surveillance and emergency response for the exclusion and eradication of unwanted organisms and associated pathogens. Information, education and awareness to allow informed use of organisms that may have potential to cause the harm, including labeling of food and animal feeds, and to facilitate community responsibility. ठीक है, it also includes a precautionary approach with respect to new organisms including genetically modified organisms and their derivatives and processed products and a system for liability and redress. ठीक है, तो these all are the biosafety managements। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, इस फ्रेमवर्क को कैसे तैयार किया गया था। गिवन द अननोन नेचर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, कंसिडरेशन ऑफ रिस्क इज नॉट लिमिटेड टू रिस्क रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टूड एट द प्रेजेंट टाइम। नेशनल बायोसेफ्टी रिक्वायर्ड कंसिडरेशन बी गिवन to potential risk, especially where imported organisms or their derivatives might enter the human chain. So risk to eliminate of native biodiversity and agrobiodiversity are both recognized as important. ठीक है, the risk of unintentional intra and inter-island spread of organisms as a result of natural or man-made disaster are also important consideration, especially where the containment measures are implied. Where information is inadequate to confirm that risks are slight or manageable, a precautionary principle will be applied. Application will be refused until the further information become available. Biosafety provision apply to all imports of living organisms with the sole exception of human beings. All importers of living organisms including intergovernment agencies, government departments, ministries, private companies, NGOs and individuals are subject to biosafety pre-import risk analysis requirements. Biosafety requirement applies without exception to VQIS, fisheries, forestry, agriculture and rural development and other development
along with the programs they manage, including where the organisms are introduced for the application in the food industry or for the biocontrol process. ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म काम में लिया जा रहा है उसके लिए आगे क्या रिस्क हो रही है, उसके लिए इन बायोसेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स हुई है. ठीक है, और वो चाहे ऑर्गेनिज्म कहीं भी काम में आ रहा है, चाहे फूड इंडस्ट्री में आ रहा है या और किसी पर्पज से उसे काम में लिया जा रहा है. To facilitate regulation of living organism, VQIS will maintain and publish an electronic register of biosafety decision. तो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन होना उनका बहुत ज़रूरी है. Processed product and other derivatives of biological organism, including but not limited to human food, animal feed, agriculture supplement and pharmaceutical, may also pose a biosafety risk, especially where they enter the human food chain or are incorporated into the environment. ठीक है, to facilitate entry of processed biological product, the VQIS will publish electronically and regularly update a schedule of processed biological product with potential to pose a biosafety risk, nothing the quarantine or biosafety risk posed by these import where appropriate. ठीक है, तो the processed biological product not listed on this schedule will be exempted from pre-import risk assessment and allowed to be imported. The system reflects current procedure in place for screening quarantine risk. A small number of processed biological products may be internationally exempted from biosafety provision as a result of legal international treaties. The VQIS will publish electronically a schedule of biological organisms and products exempted from biosafety provision due to the operation of other international agreement for reference by importers and government officials. ठीक है, the Department of Customs and Inland Revenue will continue to play their present role in intercepting imports that should have undergone pre-import risk assessment and bringing these to the attention of VQIS. As part of this biosafety framework, VQIS will work with other in-country organizations to facilitate development of appropriate provision for management, control and eradication of in-country biosafety risk. ओके, तो बायोसेफ्टी फ्रेमवर्क इसीलिए तैयार किए गए थे कि जो भी ऑर्गेनिज्म काम में लिए जा रहे हैं जो कि फर्दर ह्यूमन फूड चेन के अंदर आगे इंक्लूड्स होंगे, तो उनके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए इन बायोसेफ्टी फ्रेमवर्क्स को तैयार किया गया था. ओके, होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.